अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक फिज़िक्स 10th क्लास chapter number 6 electromagnetism. Today the lecture is based on numericals of chapter number 6 electromagnetism. So we carry on. Numerical number first is a transformer is needed transformer is needed to convert a transformer is needed to convert a mains of 240 volt supply into a 12 volt supply. If there are 2000 turns, if there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. Numerical number first is a transformer is needed to convert a main of 240 volt supply into 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on secondary coil. कि हमने इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें हम उसको 240 वोल्ट को हमने 12 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करना है। और जो ही हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो 2000 टर्न्स थी प्राइमरी कॉइल को, उसको हम सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स में कन्वर्ट करेंगे. देन सोल्यूशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा, voltage across primary Vp is equal to 240 volts, voltage across secondary Vs is equal to 12 volts, then number of turns on primary coil, and P is equal to 200, number of turns of secondary coil, Ns to be find out. कि गिवन डाटा क्या है, वोल्टेज जो अक्रॉस दी प्राइमरी है वो 240 वोल्ट्स है और वोल्टेज जो अक्रॉस हमें सेकेंडरी करना है वो 12 वोल्ट्स है. इसी तरह नंबर ऑफ़ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल पे Np 200 है और नंबर ऑफ़ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल पे होंगे वो Ns क्या होंगे. तो फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला Ns over Np is equal to Vs over Vp. कि Ns जो है वो Np और Vs over Vp के बराबर है. नेक्स्ट इज
एन एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। Putting values, then ns is equal to 12 over 240 multiplied by 200, then ns is equal to 100। ns किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। So the answer will be, so there are 100 turns in सेकेंडरी कॉइल। कि सेकेंडरी जो कॉइल होगी वहाँ 100 टर्न्स मौजूद होंगे सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 इज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर has a turn ratios of 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? Step up transformer has a turn ratio of 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? कि हमारे पास जो है एक स्टेप आपका जो है वो ट्रांसफार्मर है जिसकी कॉइल्स की जो रेशियो है वो 1:100 है और एक अल्टरनेटिंग सप्लाई भी है 20 वोल्ट्स की। और जो वो अल्टरनेटिंग सप्लाई है 20 वोल्ट्स की, जो ही हम उसको कनेक्ट करेंगे अक्रॉस दी प्राइमरी कॉइल, कि जैसे ही हम उसको प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको कनेक्ट करने के साथ हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ दी सेकेंडरी वोल्टेज, कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या है। सॉल्यूशन given data we have step up transformer, we have step up transformer, turns ratio is 1:100 means NP ratio NS। तो फिर 1 किसके होगी 100 के बराबर, कि 1:100 है। नेक्स्ट इज देन NP over NS will be 1/100 किसके बराबर होगी 1/100 के बराबर होगी। voltage across primary BP is equal to 20 volts, voltage across secondary VS equal to be find out। ये गिवन डाटा हमने लिखा है कि हमारे पास एक स्टेप अप जो है वो ट्रांसफार्मर है
और उसकी जो टर्म्स ऑफ रेशो है वो 1:100 है, जिसका मतलब है कि NP रेशो NS है। और जो ही हम NP रेशो NS स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है 1:100 है, और रेशो को जो ही हम ओवर में लिखेंगे तो NP ओवर NS हो जाएगा, तो 1/100। तो वोल्टेज अक्रॉस जो प्राइमरी होंगे कॉइल VP जो होंगे वो 20 वोल्ट्स होंगे। इसी तरह वोल्टेज जो अक्रॉस सेकेंडरी होंगे वो VS होंगे। तो फिर NP NS एंड VP अकॉर्डिंग टू फार्मूला VS over VP is equal to NS over NP। Putting values VS equal to 100 multiplied by 20, VS is equal to 2000 volts। कि जो ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो VS क्या हो जाएगा ओवर 20, तो फिर इक्वल टू 100 ओवर 1। तो हमको फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VS निकालना हो फिर 100 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 वोल्ट आंसर आएगा। हेंस 2000 volts will be produced across the secondary coil, के क्रॉस द सेकेंडरी कॉइल वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 3। Numerical number 3, step down transformer has the turns ratio. Step down transformer has the turns ratio of 1:100 and AC voltage of 17 volt is applied to the primary if the current is 10 milliampere. What is the current in the secondary? तो फिर क्या होगी करंट इन द सेकेंडरी क्या होगी? अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज द टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current is primary in 10 milliampere, what is the current in the secondary? कि हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 1:100 के साथ मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो AC वोल्टेज होगी एम्पलीट्यूड की वो 170 वोल्ट होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये अप्लाइड इन द प्राइमरी है कि उसकी 10 मिली एम्पेयर्स वहाँ मौजूद होंगे और जो ही 1 मिली एम्पेयर्स मौजूद होंगे उनकी मौजूदगी से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इज
given data, given data, we have step down transformer, we have step down transformer, turns ratio is 1:100. It means NS is ratio NP, NS ratio NP is equal to 1:100, and NS over NP is equal to 1/100, कि वो किसके बराबर होगी, वो 1/100 के बराबर होगी। नेक्स्ट इज वोल्टेज, अक्रॉस प्राइमरी, VP is equal to 170 volts, current across primary IP is equal to 10 milliampere, 1.0 10⁻³ एम्पेयर, केवल किसके बराबर होगी, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर के। नेक्स्ट इज करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट इज करंट across the secondary coil according to formula Vs is equal to Vs over Vp and S over Np. Putting values, Vs over Vp is equal to 1/100, then Vp over Vs is equal to 100 कि इसी इक्वेशन को हम इन्वर्ट करेंगे, जो ही इन्वर्ट करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, output power, input power, IS, VS, IP, VP। हमें IS फाइंड करना है तो IP मल्टीप्लाई बाय VP ओवर VS, तो IS किसके बराबर 1.0 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 100, then it will be equal to 0.1 ampere. Hence 0.1 ampere current will flow in secondary coil। कि hence 0.1 ampere current will flow in the secondary coil, कि इतनी करंट जो है वो सिर्फ इस कॉइल से फ्लो होगी, क्योंकि जो आउटपुट पावर थी वो इनपुट पावर के बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं IS VS किसके बराबर है, IP VP के बराबर है, और जो ही वो इसके बराबर होगा तो हमने IS फाइंड आउट करना है, क्योंकि IP है हमारे पास 1 मिली एम्पियर था, इसलिए जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है वो 0.1 एम्पियर है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 4।
transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC means to 12 volt has 4000 tons on the primary coil. How many tons should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 एम्पियर कि वो किसके बराबर थी? वो 0.4 एम्पियर के बराबर थी कि एक ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन हुआ था टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC means to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil? कि सेकेंडरी कॉइल पे कितनी टर्न्स मौजूद होंगी जो ही इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, और जो ही ट्रांसफार्मर क्या होगा वो 100% एफिशिएंट होगा. What current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil is 0.4 एम्पेयर? कि एक ट्रांसफार्मर जो हमने डिज़ाइन किया था उसकी वोल्टेज की कन्वर्जन के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे कि जैसे ही ये AC जो है मेन वोल्ट में कन्वर्ट करेगा तो इसमें 4000 टर्न्स जो होंगी प्राइमरी कॉइल में, तो कितनी जो मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल कि कितनी कॉइल की टर्न्स ये हैं जो है सेकेंडरी कॉइल पे मौजूद होंगी. और जो ही वो सेकेंडरी कॉइल पे मौजूद होंगी तो सेकेंडरी कॉइल पे मौजूद होने से क्या होगा कि जैसे ही हम उनको कहेंगे कि ये सेकेंडरी कॉइल पे मौजूद हैं तो हम उनको फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन इज solution given data we have step down transformer. Okay, we have step down transformer. Voltage across primary, voltage across primary VP is equal to 240 volts. Voltage across secondary VS is equal to 12 volts. Number of turns
primary coil, and P is equal to 4000. Number of turns of secondary coil, N has to be find out. The transformer is 100%. It means out power and in power, IS VS is equal to IP VP. Then IS is equal to 0.4 ampere and IP to be find out. कि IP क्या करना है, वो हमने find out करना है कि IP क्या है और कितना है. Next is according to formula. According to formula, NS over NP is equal to VS over VP. Then NS is equal to VS over VP multiplied by NP. Putting values, NS is equal to 12 over 240 volt multiplied by 4000 and NS is equal to 200. क्या NS क्या है, वो 200 है. According to law of conservation of energy, input power is equal to output power. IP VP is equal to IS and VS, and IP is equal to IS multiplied by VS over VP. Putting values, 0.4 multiplied by 12 over 240 कि वो किसके बराबर होगा, वो 240 के बराबर होगा. नेक्स्ट इज IP is equal to 0.02 ampere. Hence 0.02 ampere will flow in primary coil. तो 0.02 एम्पेयर जो है वो करंट जो है वो फ्लो होगी प्राइमरी कॉइल में. और ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5. A power station generates 500 megawatt of electrical power, which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line of the input voltage
voltage is 250 kilo volt. कि a power station generates 500 megavolt of electric power which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line of the input voltage is 250 kilo volt. कि एक जो पावर स्टेशन है उससे 500 जो मेगावाट बिजली है वो बनती है और हम देते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन को. जो ही करंट फ्लो होती है तो वो ट्रांसमिशन लाइन पे इनपुट जो वोल्टेज होता है वो 250 किलो वोल्ट्स होता है. Solution is given data power generated P is equal to 500 megawatt, then 500 multiplied 10 raised to power 6 watt, because 1 megawatt is equal to 10 raised to power 6. Then input voltage V in is equal to 250 kilovolt and 250 multiplied 10 raised to 4 3 volts. Current to be find out. करंट हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P is equal to IV, then we can write it P in is equal to I in and V in. क्योंकि हमें इनपुट करंट की बात कर रहे हैं तो फिर I in किसके बराबर होगा, P in के ओवर V in के. तो फिर हम वैल्यू प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में. Then I in is equal to 500 multiplied 10 raised to power 6 over 250 multiplied 10 raised to power 3. Then I in is equal to 2.0 multiplied 10 raised to power 3 एम्पेयर. कि आंसर क्या होगा 2.0 multiplied 10 raised to power 3 एम्पेयर. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5. Next is numerical number 6. The diagram shows a wind turbine which runs a 150 kilowatt generator with an output voltage of 1000 volt. The voltage is increased by transformer T1 to 10,000 volt for transmission to a town 5 kilometer away through power lines with a total resistance
of 2 omega. Another transformer T2 at the down reduces the voltage to 250 volts. Assume that the transformer T2 at the down reduces the voltage to 250. Assume transformers are ideal. So when running system is at full power, तो when running system is at full power, so A find out करेंगे current in power line, B voltage drop and power lost along power line. Numerical number 6 is the diagram shows wind turbine which runs 150 kilowatt generator with an output voltage of 100,000 volts. The voltage is increased by transformer T1 to 10,000 volts for transmission to a town 5 kilometers away through power lines with a total resistance of 2 ohm. Another transformer T2 at the town reduces the voltage to 250 volts. Assume that transformer T2 at the town reduces the voltage to 250. Assume transformers are ideal when running system is at full power. Current in power line, voltage drop and power lost along power line. Then solution is given data is power generated P is equal to 150 megawatt, which is equal to 150 multiplied 10 raised to power 6 watt. Input voltage V in is equal to 1000 volts. V in किसके बराबर है 1000 वोल्ट के. An ideal transformer has increased the voltage up to V in 10,000 volts. Total resistance for 5 km lines is R2 ohm. Voltage output is V0 is equal to 250 volts. क्या वो किसके बराबर होगा 250 volts के बराबर होगा. करंट I is equal to unknown. Next is according to
कि पावर के मुताबिक जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू आई वी कैन राइट P in is equal to I in and V in. Then I in is equal to P in over V in. Then I in is equal to 150 multiplied 10 raised to power 3 over 10,000. Then I in is equal to 50 एम्पेयर कि आई इनपुट वोल्टेज कितना होगा, वो 15 एम्पेयर होगा। नेक्स्ट इज फॉर वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर loss. VT is equal to IR and P is equal to IV. Putting values, VT is equal to 15 multiplied by 2, VD is equal to 30 volts. ये VD किसके बराबर है, 30 volts के। Then P loss is 15 multiplied by 30 is equal to 450 watts कि P लॉस किसके बराबर है, वो 450 वाट्स के बराबर है। ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप ऑफ VD 30 volts, remaining input voltage is V is equal to 10,000 minus 30, V is equal to 9970 volts। क्या वो V किसके बराबर है, 9970 volts के बराबर है, वही है उसका आंसर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। द बल्ब विल बी लाइटेंड एंड द मोमेंट इज स्विच्ड। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन कि इसका बी ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट था कि जो वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस्ट जो फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने वोल्टेज लॉस्ट और पावर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद इन अ ट्रांसफार्मर। प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद इन अ ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर में जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है वो कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, द बल्ब विल बी लाइटेंड, एट द मोमेंट the switch is closed, the current establishes from 0 to maximum value during which there is a rate of change of current produces in the primary coil linked with secondary coil. So induced EMF in the
secondary coil. So induced EMF in the secondary coil due to which the bulb flashes when current is constant. There is no rate of change of current. When there is no rate of change of current, so no induced EMF is produced. Then no induced EMF is produced. Next is again the bulb. Again the bulb will be lighted at the moment the switch is open. The current declines from maximum to zero value during which there is a rate of change of current produces in primary coil. So induced EMF is produced in secondary coil. के प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? द बल्ब will be lighted at the moment the switch is closed. The current establishes from 0 to maximum value during which there is a rate of change of current produces in the primary coil linked with the secondary coil. So induced EMF in the secondary coil is due to which the bulb is flashes. When current is constant, there is no rate of change of current, so no induced EMF is produced. Again the bulb will be lighted at that moment switch is open. Current declines from maximum to zero value during which there is a rate of change of current produces in the primary coil. So induced EMF is produced in the secondary coil. कि म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जो ही हमने एक बल्ब को ऑन किया तो करंट उसमें से ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगी, और जो ही वो मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगी तो प्राइमरी कॉइल में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि सेकेंडरी कॉइल में एक EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पैदा होगी, और जो ही वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पैदा होगी तो वहाँ जो है बल्ब फ्लैश करेगा, यानी बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी तरह जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं आएगा, और जो ही कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं आएगा तो एक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही एक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा तो वो जो बल्ब है उसको दोबारा हम लाइट करेंगे, और जैसे ही वो दोबारा लाइटेड होगा तो जो फ्यू मोमेंट होंगे जब स्विच को हम दोबारा ऑन करेंगे तो करंट जो है वो डिक्लाइन करेगी फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, कि करंट जो पहले मैक्सिमम वैल्यू तक आई थी वो फिर जो है वो ज़ीरो वैल्यू पे चली जाएगी, तब जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस EMF भी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, कि अब जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वहाँ प्रोड्यूस हुआ है कि उसकी करंट जो है वो चेंज हुई है। और जैसे ही हम उस करंट की बात करेंगे कि जैसे वो करंट चेंज हो रही है, इसी तरह सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस EMF भी
चेंज होगा, तो वो क्या क्या होगा, वो इस इंड्यूस ईएमएफ की जो है उसकी मोटिव फोर्स होगी। ये था प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद इन अ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन इन अ ट्रांसफार्मर। ये विद इन अ ट्रांसफार्मर था। अब हम ट्रांसफार्मर के अंदर स्टडी करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इन अ ट्रांसफार्मर के एक ट्रांसफार्मर में कितने इंडक्शन होगा। इज सप्लाइड in the primary coil produces the AC current in it. The changing current in the primary coil produces changing magnetic flux in the primary linked with the secondary coil, so produces the induced EMF in the secondary coil according to equation. EMF is equal to minus m delta I over delta t is equal to p. Negative sign is due to Lenz's law, where m stands for mutual induction, as for secondary coil across the EMF is being generated due to a rate of change of current in primary coil. Mutual induction in a transformer. In transformer, two coils are linked up with the same soft iron core. When there is an AC voltage supplied in the primary core, produces the AC current in it. The changing current in the primary magnetic flux linked with the secondary coil, so produces induced EMF in the secondary coil according to equation. इक्वेशन के मुताबिक वो क्या कहता है, जो ही एक ट्रांसफार्मर में जो दो कॉइल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, और जो ही दो कॉइल जो हैं वो एक सॉफ्ट आयरन कोर के साथ लिंक्ड होंगी, तो उनकी लिंकिंग से हम क्या कहेंगे, वहाँ एक एसी वोल्टेज जो है वो बन रहा है। और जो ही वहाँ वो एक एसी वोल्ट बनेगा, तो उसी एसी वोल्ट के बनने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो वोल्टेजेस अप्लाई हो रहे हैं, तो उन वोल्टेजेस के अप्लाई होने से क्या होगा, वहाँ फर्दर जो है वो क्लैरिफिकेशंस आएंगी। और फर्दर आने की वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है कि वो नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि आया कितने डिफरेंसेस यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, और जितने डिफरेंसेस वहाँ प्रोड्यूस होंगे उतने ही डिफरेंसेस से हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो डिफरेंसेस प्रोड्यूस हुए हैं, उन डिफरेंसेस को हम ये क्या स्टैंड होते हैं, एम फॉर
दिस, कि ये एम फॉर स्टैंड होते हैं, कि ये क्या है उस एम के लिहाज से है। तो नेक्स्ट में हम क्या कहेंगे कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये अक्रॉस दी प्रोडक्शन है, कि जैसे ही हम सेकेंडरी कॉइल स्टडी करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल के लिहाज से इसको स्टडी करेंगे। कि नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये है टॉपिक आपका अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन इन अ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, स्टेप अप ट्रांसफार्मर has 80 turns on its primary coil and 1200 turns on its secondary coil. The primary circuit is supplied with an alternating current at 120 volt. What voltage is being applied across the circuit? B. The current in the secondary circuit is 2.0 ampere. What is in the primary circuit? Then find C.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।